Hindu laws पढ़ लिया आपने? Have you studied all the chapters of Hindu law? Yes, that's very nice. Have you studied? No, don't worry. Let's have discussion on some of the basic questions related to Hindu laws. So, hello everyone. How are you all? I hope you people are fine. Hmm? So, today let's have discussion on the important MCQs related to Hindu laws. ठीक है, जो आप लोगों ने हिंदू लॉ पढ़ा है उससे रिलेटेड आज हम important MCQs करेंगे and you people mark yourself out of 15 questions today we will be discussing and आप लोग खुद अपने आप को स्कोर करिएगा and write down your answer here in the live chat and below in the comment box if you people are watching my video later on. ठीक है, starting with the first question and people give your answers honestly. Starting with the first question. ठीक है, in क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन? ये बोलता है इन रेस्पेक्ट ऑफ फैमिली रिलेशंस द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया इज ऑप्शन ए सेक्युलर लॉ इन इंडिया, ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी लॉ, ऑप्शन सी रिलीजियस लॉ, ऑप्शन डी पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज. क्वेश्चन क्या है? इन रेस्पेक्ट ऑफ फैमिली रिलेशंस द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया इज in respect to what? In respect to family relation. तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल है इंडिया पे? बताइए मुझे. सी द करेक्ट आंसर इज डी, पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज. अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो उनका पर्सनल लॉ क्या है? दैट इज उनका फैमिली लॉ क्या है? मुस्लिम लॉ. हिंदूज की बात करें तो क्या है? हिंदू लॉ. सो पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज is the in respect of family relation the law applicable in India is the personal law of the parties. Check how many of you have given the correct answer. ठीक है, अपने आप को जज करो. Now let us discuss the second question. What second question says? It says that the natural guardian of a Hindu minor as per Hindu Minority and Guardianship Act 1956 is it is talking about who is the natural guardian of a Hindu minor as per Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Your option are A. Only grandmother, B. Only mother, C. Only father, D. Both mother and father. आप लोगों ने सेक्शन 6 पढ़ा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का? वो क्या बोलता है? हिंदू देखो, नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर की बात करी गई है सेक्शन 6 पे. वो बात करता है इन केस ऑफ बॉय, अगर बॉय है तो, और अनमैरिड गर्ल. ठीक है, सेक्शन 6 का क्लॉज ए बात करता है उनके केस में द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, ठीक है, विल बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ दैट बॉय. सो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास? ओनली ग्रैंड मदर? नो. ओनली मदर? नो. ओनली फादर? नो. Both mother and father are the natural guardian of a Hindu minor. So what is the correct answer now? Option D is the correct answer. D वाला correct answer है आपका. तो क्या होगा आंसर? नेचुरल गार्जियन हिंदू माइनर का माइनर बॉय का as per section 6 of Hindu Minority and Guardianship Act 1956 is both mother and father. ठीक है, so this was about the second question. Now question number third. What it says, it talks about the Hindu Marriage Act 1955 contains the provision regarding divorce in, your option are section 16, section 15, B option, C option is section 2, D option is section 13. What is the मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या है इस क्वेश्चन का मतलब? क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डाइवोर्स का प्रोविजन कौन से सेक्शन के अंदर था? You people tell, I have already covered up the video regarding divorce. You people can check out, or if you people have yourself studied, tell me
डाइवोर्स का प्रोविजन कौन से सेक्शन के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर, बताइए। सी दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको खुद पता होना चाहिए। सेक्शन 13 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है प्रोविजंस रिगार्डिंग डाइवोर्स। गॉट इट? डाइवोर्स के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 13 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। कौन कौन से हैं? डाइवोर्स किन ग्राउंड्स में मिल सकता है? एडल्ट्री के ग्राउंड में, डिजर्शन के ग्राउंड में, क्रुअलिटी एक्सेट्रा। यू पीपल योरसेल्फ स्टडी, इफ यू पीपल हैवंट स्टडीड, प्लीज आप देखिए उस सेक्शन 13 को, उसके अंदर आपको डाइवोर्स के रिगार्डिंग प्रोविजन मिलेगा। सो दिस वाज क्वेश्चन 3। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट क्वेश्चन 4 इज टॉकिंग अबाउट, और क्वेश्चन 4 है क्या। नाउ व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एन एडॉप्शन मेड बाय मेल हिंदू विदाउट हिज वाइफ्स कंसेंट इज, एक एडॉप्शन जो कौन कर रहा है? मेल हिंदू कर रहा है, बिना अपनी वाइफ के कंसेंट लिए बिना। क्या होता है वो एडॉप्शन? क्या वो एडॉप्शन इनवैलिड होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी वॉइड। व्हाट इट इज? टेल मी। An adoption made by male Hindu without wife's consent is, see, if you people have studied section 7 of Hindu marriage, Hindu Adoptions and Maintenance Act, उसके अंदर साफ सेक्शन 7 में प्रिस्क्राइब है कि जब भी एक मेल हिंदू एक चाइल्ड को एडॉप्शन पे लेता है, देन ही हैज टू टेक द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेना जरूरी है, और उसके अंदर ये भी बताया गया है किन कंडीशन पे उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। इफ यू पीपल हैव स्टडीड इट वेरी प्रॉपरली, यू माइट बी नोइंग अबाउट दैट। ठीक है, किन कंडीशंस पे जरूरी नहीं है? इफ शी हैज रिनाउंस द वर्ल्ड एक्सेट्रा, वो आप देखिए सेक्शन 7 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की। आई हैव आल्सो कवर्ड अप, यू पीपल कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। सो एक एडॉप्शन मेड बाय मेल हिंदू without his wife's consent is invalid, voidable, valid, void. What? So it is clearly void because he has to take the consent of his wife for sure. और किन कंडीशन पे नहीं है वो तो अलग बात है, बट ये डी इज द करेक्ट आंसर। एडॉप्शन क्या होगा? वॉइड होगा अगर वो अपनी वाइफ की कंसेंट नहीं लेता। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैरिज बिटवीन पार्टीज विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज, पार्टीज के बीच में मैरिज, अब जो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन तभी आराम से अच्छे से पढ़िए व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। सी ऑप्शन नंबर ए बात करता है वॉइड, ऑप्शन बी वॉइडेबल है, ऑप्शन सी इनवैलिड, ऑप्शन डी सेज दैट इट इज वैलिड। तरीके से पढ़िए आप क्वेश्चन को, तरीके से व्हाट इट इज सेइंग। सी, आप लोगों को सबसे पहले सेक्शन 5 का प्रोविजन पता होगा, उसके अंदर क्या प्रिस्क्राइब, उसके अंदर कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज के बारे में बात करा गया है। उसमें ही सेक्शन 5 का क्लॉज 4 क्या बोलता है? लेट मी रीड आउट। It says that parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the customer uses is permitting, right? You people have studied that. Open section 5 clause 4 of Hindu Marriage Act 1955. अगर इस क्लॉज का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो that marriage becomes void as per section 11 of Hindu Marriage Act. वो मैरिज क्या होती है? void मैरिज कहलाई जाती है जब मैरिज बिटवीन द पार्टीज विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, देन दैट मैरिज इज void मैरिज। सो मैरिज क्या होगी यहाँ पे? आंसर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, अगर कस्टमर यूजेस परमिट करता है ओनली देन ओनली द मैरिज इज वैलिड, बट वो भी कस्टमर यूजेस आपको वैलिड होना चाहिए, कस्टमर यूजेस भी। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर विद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इट सेज, it talks about that a child born out of void and voidable marriage is legitimate child or his parents. This has been prescribed under which section of Hindu Marriage Act 1955? एक child जो born है out of void and voidable marriage, उसको legitimate child बोला गया है of his parents। और ये वाला कौन से प्रोविजन के, कौन से सेक्शन के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है अबाउट दिस लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड? टेल मी। ऑप्शन ए
under section 13, option B section 16, option C section 18, option D section 20. Tell me people, what is your answer? Under which section? Under section 16 of the Hindu Marriage Act 1955. So B is the correct answer right over here. ठीक है, आप में से कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? Tell me. Now, what question number 7 says? Let us have discussion on that. Question number 7 says that in Hindu marriage, bride and bridegroom has taken around 3.5 steps. 3.5 steps round the holy fire. Marriage is option A voidable, option B valid, option C void, option D illegal marriage. आप ये बताइए कि क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हिंदू मैरिज है, उसमें ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम ने 3.5 स्टेप्स लिए अराउंड दी होली फायर, ओनली 3.5 स्टेप्स लिए. अब मैरिजेस, आप लोगों ने सेक्शन 7 पढ़ा है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955. व्हाट इट सेज दैट सप्तपदी इट टॉक्स अबाउट, जहां पे सप्तपदी नेसेसरी एक important, मतलब कि one of the important rites and ceremonies है, then it has to be performed. Until and unless that 7th step is not completed, marriage is not said to be valid one. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हिंदू मैरिज में ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम हैज टेकन अराउंड 3.5 स्टेप्स राउंड द होली फायर. तो मैरिज क्या कहलाई जाएगी? 7th स्टेप तो कंप्लीट नहीं हुए, ओनली 3.5 स्टेप्स हैज बीन टेकन. So that marriage will be what? That marriage will be void marriage, because it, until 7th step is not completed, that marriage will not be valid one. Now question number 8. What question number 8 is saying? It is talking about a Hindu male is a male of 40 years. How many years? Of 40 years. He is of 40 years. ठीक है, 40 years की एज है, और he adopts a female child of 10 years. How many years? Of 10 years of age. Of 10 years की डॉटर को वो adopt करता है. The adoption is A valid, B void, option C voidable, option D illegal. आप बताइए, आप लोगों को मैंने ये बताया है पहले भी. You people can check my video, or you yourself, if have studied properly Hindu Adoption and Maintenance Act, then you people might be knowing it very properly. बताइए, सेक्शन 11 पढ़ा है? सेक्शन 11 को देखिए, उसके अंदर क्या लिखा गया है? सेक्शन 11 का क्लॉज 3 देखिए, उसमें क्या बोलता है वो, कि if the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least 21 years का एज डिफरेंस होना चाहिए. राइट, यहाँ पे द हिंदू मेल इज 40 years, 40 years की है, और जो फीमेल चाइल्ड है वो 10 years की है. व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन द टू? दैट इज 30 years. 40 minus 30 is what? 30 years आया. तो एज डिफरेंस तो अकॉर्डिंग टू लॉ 21 years का होना चाहिए, यहाँ पे 30 years का एज डिफरेंस है. तो एडॉप्शन क्या होगा? वैलिड. ठीक है, हाउ मेनी हैव यू गिवन द राइट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, एडॉप्शन विल बी वैलिड. अगर 21 years से लेस होता, देन एडॉप्शन विल नॉट बी वैलिड वन. यहाँ पे करेक्ट 30 years है, मतलब अबव 21 years तक का एज डिफरेंस होना चाहिए, बट यहाँ पे 30 का एज डिफरेंस है, तो एडॉप्शन क्या होगा? वैलिड होगा. कीप इन माइंड. Now proceeding further with question. Now what question number 9 says? It talks about that when one of the parties to the marriage is of unsound mind, the marriage is option A voidable, option B valid, option C void, option D all of the above. If you people have studied section 5 clause 2 of Hindu Marriage Act 1955, आपको आराम से आ गया होगा. बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज इज ऑफ अनसाउंड माइंड, द मैरिज क्या होगी? वॉइडेबल होगी, या वैलिड होगी, या वॉइड, या ऑल ऑफ द अबव? जब सेक्शन 5 क्लॉज 2 का कॉन्ट्रावेंशन होता है, देन सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग मैरिज क्या हो जाती है? इट बिकम वॉइडेबल. So what is the correct option? How many of you know? The correct option is A.
A is the correct answer. The marriage become voidable. Not void, it is voidable. So A is the correct answer. Got it? Now, question number 10 क्या बोलता है? The Hindu Succession Act came into force when? Option A, 17th May 1956. Option B, the 17th June 1956. Option C, 17th July 1956. Option D, 17th April 1956. हिंदू सक्सेशन एक्ट कब फोर्स पे आया? बताइए, what is the correct answer? So it came into force on 17th June 1956. So B is the correct answer of this particular question. So it came into force on 17th June 1956. We say, right, the Hindu Succession Act 1956. The date is 17th June is the correct answer. Got it? Now what question number 11 says? It is saying about with respect to section 5 clause I of the Hindu Marriage Act 1955, which of the following statement given is the correct one? ठीक है, इनमें से स्टेटमेंट दिया गया है. आप यू पीपल हैव स्टडी सेक्शन 5 क्लॉज 1 आई. क्लॉज आई क्या बोलता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 का? वो बात करता है इनमें से बताइए व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. A1 is neither party has the spouse living at the time of the marriage. B says that neither party has a living children at the time of the marriage. Option C, neither party has a father living at the time of the marriage. Option D, none of the above. So section 5 clause I का आप खोलिए बेयर एक्ट को अपनी, उसको पढ़िए, उसमें करेक्ट आंसर क्या है? टेल मी. सेक्शन 5 क्लॉज आई साफ बोलता है that neither party has the spouse living at the time of the marriage. So what is the correct answer? This is very much clear. Correct statement is option A. Option A की जो statement है, it is getting matched with the section 5 clause 1 clause I. ठीक है, तो section option A is the correct answer that neither party has a spouse living at the time of the marriage. Now question number 12. 12 क्या बोलता है? It talks about it to which of the property section 14 of the Hindu Succession Act 1956 applies. कौन सी प्रॉपर्टी के लिए this section 14 हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो अप्लाई होता है? ऑप्शन ए immovable property, option B movable property, option C both movable and immovable property, option D क्या है? None of the above. What is the correct answer? This is very much easy. अब देखो मैं सेक्शन 14 पढ़ती हूँ, उसमें बोला है कि any property possessed by a female Hindu, any property. So property का मतलब property में both movable property as well as immovable property both are included. ठीक है, property individually immovable के ऊपर नहीं है ना ही movable, property के अंदर दोनों आ रहे हैं, that is movable also as well as immovable property. So what is the correct answer? C is the correct answer, that both movable as well as immovable property will be coming under it. So C is the correct answer. Tell me how many you have given the correct answer. Do you know? That's very nice. Now question number 13. What question number 13 says? It says that any party possessed by a any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after commencement of the act, shall be held by her as. ठीक है, any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of the act, shall be held by her as option A, limited owner, option B, ancestral property, option C, stridhana property, option D, full owner. For this, once again I'll say you people, prefer section 14. It clearly says that any property possessed by female Hindu, whether acquired or before or after the commencement of this act यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 shall be held by her as the full owner
thereof and not as the limited owner. So clearly it says that which option is the correct? Tell me. Option D is the correct answer. Very nice. ठीक है, option D is the correct answer. और question number 14 अब क्या बोलता है? It says that to mature as a ground of divorce, the desertion under the Hindu Marriage Act 1955 must continue for a minimum period of, ठीक है, desertion as a ground, desertion is a ground for divorce, right? तो कौन से सेक्शन के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है? पहली बात तो अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं, उनमें से एक ग्राउंड है डेजर्शन. डेजर्शन का प्रोविजन सेक्शन 13 के अंदर है, दैट इज अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई बी. व्हाट इट सेज दैट it has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. How many years? Clearly says that 2 years. Option A 1 year, option B 2 years, option C says 3 years, option D none of the above. Tell me what is the correct answer now. Right now I have told you people, it is very much easy. Option which is the correct? Option B is the correct answer, that is 2 years. Okay, this is easy one. Now last question, that is 15th. Now let us discuss question number 15. This is the last question. What it says that who comes first in succession as per section 8 of the Hindu Succession Act 1956. Option A is cognate, option B agnate, option C relatives specified in class 3rd of the schedule, option D relatives specified in class 4th of the schedule. Which is the correct answer? Correct answer is B. First of all, B is the correct answer. Tell me people, how many of you have given the correct answer without wasting much of your time. देखो एग्नेट, आप सेक्शन 8 के अंदर जनरल रूल स्पेसिफाइड है सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स के अंदर. सबसे पहले प्रॉपर्टी जो होती है क्लास 1 है, जो वन ऑफ द क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्टली हेयर्स जो क्लास 1 के अंदर है उनको जाती है. देन क्लास 2, देन अगर क्लास 1 में अगर कोई नहीं था देन क्लास 2 में जाता है. इफ नो वन इज देयर इन द क्लास 2 schedule then it is going to agnate, then to class, then to cognate. ठीक है, क्लास 3 क्लास 4 नथिंग sort of is there. तो यहाँ पे क्लास 1 नहीं है, क्लास 2 नहीं है, तो क्लास 2 के बाद सीधा आता है agnate. So property will go to agnate. So agnate is the correct answer here. So now people tell me how many of you have given the correct answer. आपके out of 15, how much you people have scored? I hope this was interesting one and you people, आप लोगों को समझ में आया होगा that how we have to solve MCQs as well और कैसे answers देने हैं. ठीक है, and this was all about this video, and if you want more videos like this, you people can tell me below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. And thank you so much for attending this session. Thank you so much. And for more videos, do let me know.